Good morning, students. Once again, welcome back in social science subject live class for standard 8. Okay, and I hope that all the students would be live very soon. Okay, right now no one is there. Yes, what is happening, beta? All of you knows that our class starts at 8:20. Yes. Okay, very good. Soumya Soni, welcome. Good morning. Good morning, Soumya. Just let me adjust the things. Okay. Yes. So, only one student. Why is it so? Soumya, where are the remaining one? Okay. Good morning, Sandhya. Yeah, joined the class after so many days. Sandhya, yes. Why do you join the class after so many days? It's not good, beta. Okay. So you are a good student, but again, regular attending of the class is the most important thing. Okay. Yes. So welcome back, students. As all of you knows that currently we are doing revision in geography chapter number 2. Okay, beta. So yesterday we have completed many things. Okay. So just we are continuing from that section only. So the topic that we are currently discussing. Okay. And this is according to our textbook. Okay. So the topic that we are discussing in our textbook is what? Land use. Okay. So yesterday we have discussed number of things regarding the land use. Okay. So land is used for different purposes. Okay. So the different purposes for which the land is used is commonly termed as what? Land use. Okay. Then we also discussed that the use of land is determined by physical factors. Use of land is determined by physical factors. What are the physical factors? Topography, soil, climate, minerals, and availability of water. Okay. So these are some factors on which the use of land depends. ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर क्या डिपेंड करता है? यूज ऑफ लैंड डिपेंड करता है. गॉट इट? ओके. सो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स, है ना, कि कहीं पर जो लैंड का यूज है वो किस प्रकार से हो सकता है. लैंड का यूज किस प्रकार से हो सकता है ना, कि कहीं पर किसी जमीन पर एग्रीकल्चर हो रही है, कहीं पर रोड कंस्ट्रक्शन है, कहीं पर माइनिंग हो रही है ना. सो आखिर लैंड का यूज किस किस तरीके से हो सकता है. तो किसी स्थान पर लैंड का यूज किस प्रकार होगा या किसी स्थान पर लैंड का यूज किस तरीके से हो सकता है. Now it is determined by number of physical factors. ये किससे पता चलेगा? बहुत सारे physical factors से पता चलता है. So what are the factors? Topography, soil, climate, minerals and availability of water. ठीक है. So minerals होंगे तो what purpose? For what purpose the land could be used? If the minerals are there, then the area has a mining industry, है ना. यदि क्या होगा? मिनरल्स होंगे तो मोस्ट नेचुरल है कि उस इलाके में, उस एरिया में क्या होगी? माइनिंग इंडस्ट्री होगी. बेटा why it is happening that few of the students are becoming online and then they moved out?
सौम्या, संध्या, अंजलि, अर्ना, ठीक है, सारा लटारे, प्रतिभा पांडे, प्रांजलि, यशवी देवेकर, सृष्टि, रिद्धि. इट मीन्स मोर देन 8 to 9 स्टूडेंट्स आर देयर, और यहां सिर्फ 7 दिख रहे हैं. 2-3 जो है गुड मॉर्निंग सर करके भाग गए. चलिए, ओके. सो लैंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू ओनरशिप. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप the land can be classified as private land. What is private land? Okay, so what is the private land owned by individual? What is private land owned by individual? So what is private land? Private land is owned by individual. Okay, so if the land is owned by the individual, then the land is known as what? Private land. Okay, then next one is community land. Okay, what is the next one? Next one is community land. Okay, now what is community land? Owned by community. Okay, now owned by community means there is no individual person or one single family who is the owner of the land. कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल या एक सिंगल फैमिली ऐसी नहीं होगी जो क्या है, ओनर ऑफ द लैंड है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड माई हाउस, ओके, मेरा यदि पर्सनल कोई घर मकान है, सो दैट इज व्हाट माय प्राइवेट लैंड. ठीक है, वो मेरा क्या होगा, प्राइवेट लैंड होगा. ठीक है, बट इफ देयर इज ए, फॉर एग्जाम्पल, अ गार्डन कंस्ट्रक्टेड बाय नगर पालिका, ओके, द रोड्स which are there in the countryside, okay, so these are what, these are the community land. ठीक है, तो ऐसी जमीन जिस पर मालिकाना हक एक बंदे का या एक सिंगल फैमिली का होगा, that is a private land. Okay, sometimes the people can make, okay, the, we can say, private company. Okay, so then in that case also the land is a private land. So community land which is for the common use. Okay, so for example the forest area. Okay, so from forest area the people are collecting the timber, they are collecting the fodder, fruits, nuts, etc. Okay, so the forest could be considered as a community land. The garden made by Nagar Palika is a community land. Okay, just a minute beta, let me close the door. So private land owned by individual, community land owned by community. Okay, so these community land are also called as what, the common property resources. ठीक है, so these are also called what, the common property resources. ठीक है, ये जो लैंड है
कम्युनिटी लैंड, उसे और क्या कह सकते हैं बेटा? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है, अब जब हम लैंड यूज की बात करते हैं तो देयर आर सम इश्यू दैट द ह्यूमन पॉपुलेशन इज फेसिंग नाउ डेज, है ना। लैंड यूज से रिलेटेड एक जो प्रॉब्लम अब हम लोग फेस कर रहे हैं वो क्या है कि द पीपल एंड द डिमांड फॉर लैंड आर ग्रोइंग डे बाय डे, है ना। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, भोजन करवाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है बहुत सारे अनाज की। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है? मोर लैंड नीड टू ब्रॉट अंडर द कल्टीवेशन। ज्यादा से ज्यादा जमीन पर खेती करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, बट अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड इज लिमिटेड। जमीन की अवेलेबिलिटी कैसी है बेटा? लिमिटेड है ना। जमीन तो बढ़ाई नहीं जा सकती, पॉपुलेशन बहुत तेजी से क्या हो रही है? बढ़ रही है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट द पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स। ठीक है, अब जब जमीन की आवश्यकता बढ़ रही है, जमीन का लालच बढ़ रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं? What the people are doing? People are encroaching the common land. ठीक है, जो कम्युनिटी लैंड है, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, उस पर लोग क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं। Got it? Okay, so they are encroaching the land for building up the commercial complexes, housing complexes in urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. Today, the vast changes in our society. ठीक है? So, today the vast changes in land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslide, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activity. तो दिन ब दिन लैंड रिसोर्सेज का जो यूज है, ठीक है, because of that what has happening, the human population is facing lot of problem, lot of issues nowadays. आज हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारी समस्याएं फेस कर रहे हैं। What are the problems? Land degradation, next is landslides, next is soil erosion and desertification. Okay, so that's all for what? The use of land. ठीक है, then the next topic, a very small one, is basically what? Conservation of land resources. ठीक है, conservation of land resources. Okay, now what does it means when we say conservation of land resources? ठीक है, so conservation of land resources basically means to utilize the available land in such a manner that each and every inch of the land would be useful for us. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मतलब हमारे पास, हमारे मतलब इंसानों के पास, ठीक है, तो इंसानों के पास जमीन अर्थ पर जितनी भी अवेलेबल है उसको इस तरीके से यूज करना कि जमीन का एक सिंगल इंच टुकड़ा भी वेस्ट मतलब खराब ना। Getting it? So each and every inch of the land, each and
every inch of the land. Beta, which diagram? Yes. Figure 2.3, soil profile. Okay, this figure 2.3, soil profile. Okay, this 2.3 soil profile may come in exam. Sandhya, figure 2.3, it is for what? Soil profile. Okay, so it may come in exam. ठीक है, ये वाला फिगर एग्जाम में आ सकता है. Got it? चलिए, so conservation of land resources. Okay, so conservation of land resources basically means कि हमारे पास में जो लैंड रिसोर्स है ना, जमीन है, उसको क्या करें हम? अच्छे से यूज करें. बट व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द ग्रोइंग डिमांड, ओके, द ह्यूमन बीइंग इज indiscriminately destructing the forest cover. बड़ी तेजी से हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट कवर को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं. जंगल बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं? काटे जा रहे हैं. ठीक है. देन खेती की जमीन बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी अब ज्यादा से ज्यादा इलाके में इंसान क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर कर रहा है. ठीक, परंतु इस एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि डे बाय डे बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस इरिगेशन, बिकॉज ऑफ द रेगुलर इरिगेशन, ठीक है, द लैंड इज बिकमिंग बैरन. लगातार सिंचाई करने से, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करने से जमीन क्या हो रही है? बैरन. बैरन मतलब बंजर हो रही है. ठीक है, इसलिए द क्वालिटी ऑफ द लैंड इज डिग्रेडिंग. जमीन क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है ना, जमीन खराब हो रही है. सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर नाउ अंडर द थ्रेट. अब हमारे सामने क्या खतरा है कि वी आर losing this natural resource. Okay, yes, just a minute beta. Where are the remaining students? ये एक बार आते हैं, गायब क्यों हो रहे हैं? What is happening beta? हाँ, sometimes the 6 students are there, sometimes 9, but when I got there were 11 students. प्रांजलि जोगी, यशवी देविकर, सृष्टि आसोले, come back fast. ठीक है. So there are some common methods for the conservation of land resources. Okay, so what type of methods should be used? ठीक है. So methods for land conservation. ठीक है. So what methods should we use for the conservation of land? ठीक, जमीन डे बाय डे खराब हो रही है, quality is deteriorating. So what type of methods should we use for the conservation of लैंड रिसोर्सेज? जमीन को, लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कौन कौन सी मेथड हमें यूज करना चाहिए? ओके, सो व्हाट आर द मेथड्स? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज afforestation. Okay, now so we might have discussed one more term related to this, and that is what?
deforestation. Now deforestation is what? Cutting down the trees from the forest area. ठीक है? So deforestation is what? Disappearing of the forest. Deforestation is what? Disappearing of the forest resources. जो forest resources हैं वो क्या हो रहे हैं? Disappear हो रहे हैं. So disappearing of the forest resources is what? Deforestation. तो उसी का उल्टा क्या होगा? Afforestation. ठीक है? So what is afforestation? कि जंगल हम दोबारा क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं. So afforestation, then land reclamation. Next is what? Land reclamation. Okay. Now what is the meaning of land reclamation? Land reclamation basically means कि some years back, some days back, okay, the quality of the land becomes so worse that we would not be able to use the land for any purpose. जमीन इतनी खराब हो गई, इतनी बेकार हो गई कि हम उस जमीन को किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. ओके, दैट इज व्हाट. ठीक है? So that is known as what? Basically the degradation of land. तो उस degradation of land को ठीक करने के लिए what we need to do? Land reclamation. अब land reclamation मतलब so land reclamation में क्या होगा कि वो जो जमीन खराब हो गई है उस खराब जमीन को वापस उपयोग के लायक बनाना. ठीक है? So that is what land reclamation. ठीक है? Then regulated use of insecticides and pesticides. ठीक है? So regulated use of insecticides and pesticides मतलब जो insecticides, pesticides हैं उसको regulated मतलब एक proper तरीके से क्या करना? use करना. ठीक है? So regulated use of insecticides, pesticides and fertilizers. Okay. Then next is what? Check on overgrazing. Check on overgrazing. So check on overgrazing का सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो हमारे पास में फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज हैं, ओके, वहां पर क्या एक लिमिट से ज्यादा एनिमल ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए. ओके, so these are some of the common methods for land conservation. ठीक है? You may be asked, है ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि कैसे mention some of the common methods used to conserve land resources. है ना? इस लाइन पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि mention any 4 methods for the conservation of land resources. तो लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए what are the common methods? Afforestation. Afforestation means growing more and more trees, increasing the forest cover. Land reclamation means if the land quality becomes deteriorated, then the land should be improved up to the level that it could be used for a proper purpose. Then regulated use of insecticides, pesticides and fertilizers. ठीक है? So agriculture sector में क्या होना चाहिए? Proper use of these resources. Then check on overgrazing. ठीक है? So these are the few methods or the ways for the conservation of land. ठीक है?
तो लैंड कंजर्वेशन के लिए ये कुछ कॉमन तरीके हैं. ओके, देन got it. So the next topic that is there is related to what? Soil. ठीक है. So अगला टॉपिक जो हमारे पास है according to the textbook, it is what? Soil. Okay. So what is soil? ठीक. The thin layer of what is soil? The thin layer of grainy substance. The thin layer of grainy substance. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth. Okay, so the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. ठीक है. So what is soil? The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. ठीक है. Okay, so landform determine the type of soil. What does it means? कि which type of soil is present in any particular area. किसी इलाके में, किसी एरिया में किस प्रकार का सॉइल होता है, किसी एरिया में, किसी इलाके में किस प्रकार का सॉइल होगा, इट मोस्टली डिपेंड ऑन लैंड फॉर्म्स. ठीक है. ये मैक्सिममली किस पर डिपेंड करता है? लैंड फॉर्म पर. लैंड फॉर्म यानी जहां पर जिस प्रकार की जमीन होगी उसी के हिसाब से उस इलाके में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती है. ठीक है. देन हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड. ओके, सो सॉइल इज मेड अप ऑफ organic matter. Okay, now what is organic matter? The decomposed material of living bodies. ठीक है, is known as what? Organic matters. ठीक है. So organic matter क्या होता है बेटा? जितने भी living bodies हैं, once they died, है ना, they are decomposed by different organism. उनका क्या हो जाता है बेटा? डीकम्पोजिशन हो जाता है. ठीक है. और डीकम्पोजिशन के बाद जो बचा वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक मैटर. ओके, so soil is made up of organic matter, then minerals. What are present in the soil? Minerals. Okay, and weathered rock material. And weathered rock materials. ठीक है. So these are what the different things, okay, from which the soil is made. Okay, so the soil is composed of what? Organic matter. Soil किससे मिलकर के बनती है? ऑर्गेनिक मैटर. और किससे मिलकर के बनेगी? मिनरल्स. और किससे बनेगी? वेदर्ड रॉक मटेरियल्स. ओके, सो द सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. सॉइल किस किस से बनेगी? ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से एंड वेदर्ड रॉक मटेरियल. ओके, नाउ
this happening or it happens through the process of weathering. ठीक है, अब ये सब होगा किससे? प्रोसेस ऑफ वेदरिंग से. ठीक है, देन the right mix of minerals. I am again repeating, the right mix of minerals and organic matter. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. ठीक है, got it? So the right mix of minerals and organic matter. हर जगह की मिट्टी क्या नहीं होगी? फर्टाइल नहीं होगी. So soil would be fertile. Soil would be fertile. मिट्टी कैसी है? फर्टाइल है, उपजाऊ है. तो उसके लिए क्या जरूरी है? What is required? The right mix of minerals and organic matter. Soil में प्रॉपर क्वांटिटी में क्या होना चाहिए? मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, यदि ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी ज्यादा है, मिनरल्स कम है, तो प्लांट क्या होगा? ग्रो होगा, ग्रोथ अच्छी होगी. बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की कमी के कारण उस प्लांट में बीमारियां भी बहुत लगेंगी. फ्लावरिंग नहीं होगा, फ्रूट बेयरिंग नहीं होगा. ठीक है, सो राइट मिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी प्रॉपर कब होगी? व्हेन देयर इज ए राइट मिक्सचर, दैट इज द प्रॉपर क्वांटिटी would be present in the minerals and the organic matter in the soil. तो soil में प्रॉपर क्वांटिटी में मिनरल्स भी होना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए. Got it? Okay. So that is what basically about the soil. ठीक है. There is a very small section which is given in a box, okay, and this section is related to landslide. ठीक है बेटा, एक छोटा सा सेक्शन हमें बॉक्स में फॉर द इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. एंड दिस सेक्शन इज व्हाट? द सेक्शन इज अबाउट द लैंड स्लाइड. ठीक है, सो व्हाट इज लैंड स्लाइड? अरे बाबा रे, sir, from tomorrow class will be on 8 a.m. Beta Sandhya, tomorrow is Sunday, I think. Okay, so I am not going to take the class. And day after tomorrow, okay, the class will certainly be from 8 or 8:20 a.m. ठीक है, लगभग 8:20 से शुरू हो पाती है क्लास, है ना बेटा? चलिए, I think you got the answer. हाँ, certainly on Monday. It will start around 8:15 to 8:20. ठीक है, चलिए. So the next thing that we need to discuss is about the land slides. ठीक है, so what is land slides? So land slides, okay, are simply defined as, okay, the landslides are simply defined as the mass movement of the mass
movement of. So what is landslide? So it can be simply defined as the mass movement of rock, debris, okay, or earth down a slope. Okay, so what is landslides? So landslides are simply defined as the mass movement of rock, debris और earth down a slope. ठीक है? So natural है कि क्या है? There should be a mountainous region. लैंडस्लाइड में क्या होगा? जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा, है ना, डेब्रिस का मतलब होता है जमा हुए पत्थर, पेड़ पौधे, मलबा, तो वो क्या हो रहा है? ऊपर वाली हाइट से कहां की तरफ फिसलेगा? नीचे की तरफ। यानी क्या होना चाहिए? हाइट होना चाहिए। इट वुड बी अंड्यूलेटिंग लैंड। जमीन कैसी होगी? अंड्यूलेटिंग होगी, ऊबड़ खाबड़, ऊपर और नीचे। ठीक है? तो जब इस प्रकार का अंड्यूलेटिंग लैंड होगा तो दैट इज व्हाट माउंटेनियस रीजन। ठीक है? एंड इन दैट माउंटेनियस रीजन, because of the continuous rainfall, sometimes because of the falling of glaciers, what happens? The landslide occurs, है ना? We might have observed 10 to 15 days back, okay, there was a huge landslide in Uttarakhand. ठीक है? So we heard the news about that landslide 15 to 20 days back. Okay, what happens in that area? Okay, it is near Chamoli in Uttarakhand. So what actually happened in that area? Okay, the glacier suddenly slopes down. Okay, that is what the glacier along with the land on which the glacier was there, the entire area, okay, face the landslide, and because of that landslide, what happens? Suddenly the pressure of the water increases and the flood occurs on that area. So इस प्रकार से landslide would only occur in the mountainous region. ठीक है? So that's all for today live class beta, because already it is around 38 minutes. So the next teacher is supposed to come into this room. Okay, so we are winding up today's session only. ठीक है? चलिए, इससे पहले थोड़ा सा बात करना चाहता था। ठीक है? How many students in whose families, okay, you are using the packaged आटा और फ्लोर? आप में से किन किन स्टूडेंट्स के घरों में, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप में से कितने स्टूडेंट्स के घरों में पैकेज्ड आटा या फ्लोर यूज किया जाता है? पैकेज आटा या फ्लोर किस किस के घरों में यूज होता है? आशीर्वाद का आटा या पतंजलि का आटा वगैरह यूज होता है ना, पैकिंग लेकर के आते हैं, जो अंबुजा में रहते हैं तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर के आते हैं ना, 5 किलो का या 10 किलो का पैकेट वगैरह। ओके, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है बेटा, ओके, सो नॉट यूजिंग। ओके, ठीक है, because actually I want to start one campaign, okay, for collecting the polythene bags, okay, but since all of you are not using, okay, so this campaign would not be useful for us. Okay, so we are winding up the sessions. Thank you, goodbye.